insightful discussion. We have our expert moderator with us, Syed Shayan. Welcome to the esteemed panelists. सबसे पहले मेरे ख्याल में मैं अपना तारुफ करवा दूं. मेरा जो career start हुआ था 2013 में. I started working with governance as part of one of the European Union commissions who were overseeing elections, and फिर 2015 में हमने local governance के elections को भी oversee किया. So वहाँ से जब मुझे ये moderate करने के लिए invitation आया तो मेरी वो सारी यादें ताज़ा हो गई कि हम लोगों ने किस तरह से काम किया था and how all of it was set up. Lekin ab I have moved towards technology. I have worked with the National Incubation Center and have now set up my own company. But that's about me. We have esteemed panelists with us. You have heard their names, but what I'll quickly do is request everyone starting from Mosharraf to please tell us what Tabadlab is doing, how are you interacting with different government departments, and what is your insight on the service delivery sector largely in Pakistan. Thank you, Shayan, and thanks to DIC and the organizers for this opportunity to engage with everyone. This is a great panel, and I don't know if I'll add any sort of substantive content, but I think I'll be happy to throw in what I think are points to ponder. Tabadlab is a private limited company. I think we have the heart and soul of a think tank, but the balance sheet of a consulting firm, which doesn't mean that we have a good balance sheet. It means that we have to hunt and fight for survival every month. But that gives us a chance to work on a lot of different topics. Over time, one of the areas that I've worked on since my career started, which was a little bit before yours, was the convergence of digital and the use of technology. And एक ज़माने में इसको IT कहते थे, फिर इसको information management tools कहते थे, फिर ICTs भी कहते थे, अब इसको digital कहते हैं. It's been now a quarter century that these topics have been discussed and debated and thought about. And I think, one thing that is amazing in our country is the fact that we have folks from KT board and Punjab IT board. And these guys have to work in a very, very technology and youth adverse environment. So the ecosystem that they're trying to run these organizations in, that ecosystem is actively, structurally designed to get in their way and to make it hard to do their jobs. In our experience, there is a broad appetite within government, whether it's education or immunization, public health, even gender, certainly social protection through BISP and ESAS. In all of these, you see the inclusion of technology because there is an understanding that it has to be used. But do we see an integration across functions and technology? We don't see that. And I can speak more to why I think that is, but I think hopefully that's a useful introduction and carry on the discussion. Absolutely. Thank you, Mosharraf. Moving on to Dr. Tinauli. Can you please introduce what Curate tomorrow is doing? And there are a host of other startups and companies that you have been working with, especially in the rural parties. I would like to hear more about that from Can it's called Curate tomorrow. Bring experts, government officials, from all of the ideas. Because the challenge so now we only have 8 years to reverse the climate
from getting their disaster and all of them basically. So we sit together in trying to find what can be. That's the social aspect of what I do. I also run a company on it. I've started at least 4 or 5 people. You know, entrepreneurship, you have to. We talk the words, but what's the mobility is an essential part of how we live. PADB to find some solution over the night. Like अभी आपने recently देखा होगा driving license के ऊपर, it hardly takes 1 week or 15 days timelines के बस we have to done. So मेरे कुछ अगर मैं PADB में काम कर रही हूँ 2013 से और इनिशियली जो मैंने काम किया था वो वर्ल्ड बैंक एक फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्पेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड की थी. उसके बाद अब मैं लोकल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ और लोकल गवर्नमेंट की 15 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं. उसके पीछे जो हमारा मेन एम है, हम वन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां तमाम सिटीजन जो हैं अगर लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने कोई सर्विस लेनी है, कोई कंप्लेंट करनी है तो सिर्फ उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी सर्विसेज भी मिलेगी, उनके सारे बैकएंड प्रोसेसेस भी वहीं पे है. आप किसी एक बंदे का अगर आप उनके बैकएंड प्रोसेसेस की बात करें, आप किसी एक बंदे का नाम लिखें, उसकी सारी प्रोफाइल आपके पास आ जाएगी कि वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, उसके अगेंस्ट कितनी इंक्वायरीज है, कितने एसेट्स इशू हुए हुए हैं, फाइनेंशियल प्रोफाइल्स हमारी कंप्लीट बन रही है. तो हम लोग उस एक स्टैंडर्ड उस एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर.
जहाँ तक बात करते हैं PIDB के, तो PIDB के कुछ फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, जिसमें एक आपका E-FOS है जो इम्प्लीमेंटेड है तमाम लोकल गवर्नमेंट में, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में, एंड स्पेसिफिकली अब तमाम जितनी भी समरी CM के पास जा रही हैं, CS के पास जा रही हैं, वो थ्रू E-FOS जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था जो PIDB ने अचीव किया है। आप लोग भी अदरवाइज पहले फाइल के पीछे पीछे भागते रहते थे और फाइल्स कहाँ गई हैं किसी को नहीं आइडिया होता था। सेकेंडली जो मुझे PIDB का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता है वो है E-स्टैंपिंग का, BOR का। सो E-स्टैंपिंग उसने भी एक पूरी चेंज रिजीम थी जिससे सारा काफी उसके जितना करप्शन माफिया खत्म हुआ है उस तरह का एग्जांपल इसके अलावा पूरे मेरे ख्याल से पंजाब में, पाकिस्तान में उस जैसी कोई एग्जांपल नहीं है E-स्टैंपिंग जैसी। तो इसके अलावा और भी काफी इनिशिएटिव है। इवेंट्स हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमने हेल्थ को हैंडओवर कर दिया है, वो भी हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था। अब उसके ऊपर वो इवन उसकी स्टोरी भी वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की थी। सो इस तरह और भी काफी इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा काम मेनली है डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, डिपार्टमेंट को इनेबल करना कि वो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं तो वो डायरेक्टली लिंक होती है डिमांड से। अगर आपकी किसी चीज की डिमांड नहीं है, आप जितनी मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, अडैप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। और ये कोविड ने हमें ये रियलाइज करवाया। बिफोर कोविड काफी आपके प्रोजेक्ट्स थे जो आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेकर आए, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए, वो सक्सेसफुल नहीं थे। बट ड्यूरिंग कोविड वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है हमने वो लाइव होते हुए देखे, जिसमें आपके काफी E-FOS भी उसी ड्यूरेशन के दौरान हमारे ऑफिस में बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हुआ। इस तरह और भी है। That's all from my side. I hope I'm not. नहीं, thank you so much, Mariam. अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद questions and answers में जाऊँ अपने panelists से, what I like to do is कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको बताऊँ कि इसका context क्या है, why we are having this panel discussion in this event. So as the team members earlier talked about कि हम लोगों की जो problem वो है identification है, आप लोगों से निकलनी है, community से निकलनी है. That is why we are having this discussion, because yes, we all are encountering different problems in our lives and we know where the touch points are, where those problems are emerging from. But you have to hear from the public sector, from the private sector, from the social sector कि उनको किस तरह से इसके बारे में insights हैं, what is the inside information on all this, और उनके possible क्या resolve करने का तरीके हो सकते हैं, क्या resolutions हो सकते हैं. So we are here just to provide you that direction, broader direction, and then you can probably link it to the larger idea that you might have in this event. So coming back to you, Mosharraf, हम लोगों ने अभी थोड़ी सी background इसके ऊपर conversation भी की थी. सबसे ज़्यादा जो हमारे नौजवानों में हमें नज़र आ रहा है in youngsters, there is a lot of passion, there is a lot of energy, but not a lot of understanding of what is going on behind the scenes and why is it all happening. So they see a government abroad somewhere in Europe probably digitizing so fast, and they think that this is possible in Pakistan as well. Why do you think कि हम लोग और क्यों आप सोचते हैं कि हम लोग को इंस्पिरेशन तो उनसे ले सकते हैं लेकिन उसको लोकलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? That's a great question, Shayan. I think ये इसमें बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि मेरे ख्याल है 2 या 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो टॉपिक हमारा था in terms of how technology can enable or improve public service delivery. I think that's in fact public उसका हिस्सा नहीं है, which is good. So I think service delivery can be improved with technology. And actually, you don't need government for that. So, for example, this country has now as much as 40% of all school-going children, K through 12, they attend private schools. And a lot of those schools are low-cost private schools. So there's a lot of technology solutions that those low-cost private schools are not using, whether it's in the realm of classroom facilitation, whether it's in the realm of content management, whether it's in the realm of performance management, accounting software for schools, tax facilitation services. There's a whole spectrum of apps and applications that may exist, but where the scope for growth is huge. So if the question is how do we improve service delivery, you don't need government at all. You can just directly go and start working on that. Same thing goes for public health. I think there's other areas, including
solid waste management, generic cleanliness, water supply chain in cities like Karachi, which now is totally privatized. Whatever we might think of the political economy of that, ये सारी वो चीजें हैं जहाँ आप technology hacks के through service delivery को improve कर सकते हैं for big numbers of Pakistanis. And ideally, you can make a lot of money doing so if you have a solution that really works. You'll have private sector actors that will pay you, and you never need to bother with government. Now, I say that because it's become a culture, and I've contributed to that, I think, in my way. But it has become a culture that we essentially have a lot of complaints with governance and with government and how it works, and I think we should, because government hasn't worked. But I think it's important to remember, and this is to answer directly your question, that digital transformation or technology adoption in the public sector everywhere in the world, maybe there's one or two examples जहाँ बहुत तेजी से uptake थी. उसकी वजह ये भी है कि they could afford to experiment and fail. So if the government of Dubai wanted to use AI for traffic management, they commissioned 4 or 5 contracts at the same time to all the big actors. And one of them failed and the other one failed, but then one was kind of okay and another one was kind of okay. So then they canceled the 2 other contracts and then they pushed the ones that had something along the lines of an answer and said, okay, next iteration of the contract. Now, in this country and in most advanced European countries, in Latin America, in Africa, in East Asia, उस तरह की fluidity or rapid decision making or public sector funding in हुकूमतों को available नहीं है. And so I don't think it's just Pakistan that struggles, and I think it's actually a global phenomenon that digital transformation is very difficult. There's many reasons for that. Many of you would know those reasons better than I do, right? It's hard to go over 5 or 10 years using the same platform. So आपकी अगर कोई original solution C++ में हुई थी, अब मैं अपनी उम्र दिखा रहा हूँ because I'm using a technology जो मेरे ज़माने में बड़ी advanced थी, या उससे भी advanced Java script जो है वो थी, अब पता नहीं वो Python इस तरह की चीजें आ गई. तो वो जो आपकी baseline जो थी, in many cases you have to dump that and you have to start all over again. When you start all over again, do you necessarily check with all the other departments कि यार मैं back end पे आपके साथ plug in कर पाऊँगा या नहीं? चले शायद KP में वो सारे KP departments में तो कर लें. But it might be that Punjab had just spent 10 billion rupees on updating its own thing. So now all the Punjab apps are on the same back end and all the KP apps are on the same back end. But when we came to Islamabad, we discovered, oops, उन्होंने version 3.2.1 इस्तेमाल किया हुआ है और हमारा version जो है वो 4.2.6 है, and now we can't talk to each other. Now that's a real world problem, और इसमें कोई ना corruption है, ना धांधली है, ना incompetence है. For the work that KPIT board is doing, they did the right thing, and for the work I was doing, they did the right thing. So I think what I would maybe conclude with is that our expectations of the public sector tend to be extremely high, and even these ideas कि जी वो दुबई में ये चीज हो रही है या नॉर्वे में ये चीज हो रही है, उस तरह की चीजें यहाँ भी हो रही है. There are individual islands of excellence. Madam just alluded to a few of them. Again, I'll show my age, लेकिन जो ज़ुबैर भट्टी और उनकी टीम ने काम किया था जग में, वो एक ग्लोबल एग्जाम्पल जो है वो था. आज तक जो केनिया में एमपे के थ्रू फैसिलिटेशन हुई, वो कई एडवांस ममालिक, अमेरिका वो नहीं कर सका है, चाइना वो नहीं कर सका है, लेकिन on payments, for example, and on back-end sort of integration of individual identities within WeChat or whatever sort of platform they're using, there's a lot of that. We don't have that yet. Indonesia has a platform जहाँ लोगों की सारी data, Uber, उनकी पढ़ाई, उनका wallet, उनके पैसे वो सारी एक जगह है. India has made a lot of advances in its public stack. But those advances were late. Pakistan had a baseline stack that was much more advanced ahead of many of these countries. So I think इन चीजों को evolve करने में भी time लगता है. I'm not saying कि हुकूमत ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, but I'm saying कि अगर हम expect कर रहे हैं कि सारी solutions जो है हुकूमत से आएंगी, तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. Solutions जो है वो private sector में आएंगी. हमारा जो आप सबका जो advantage है, I know I've taken longer than you like. I think the huge advantage we have is that because the public sector has failed so spectacularly,
on baseline public service delivery, then the gap has been covered by private sector actors in almost every field. And so you have this huge numbers of private sector actors who you can engage with directly without worrying about PEPRA procurement rules, without worrying about needing to please or grease the wheels. आपको भी private sector में मतलब उस तरह से at least रिश्वतें या उस तरह के pressures आपके पास ऊपर नहीं आते. So there's a lot more freedom, I think, in working with the private sector. थैंक यू मुशर्रफ. और जो मुशर्रफ ने अभी बात की है मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा PITB बोर्ड और KPIT बोर्ड के साथ कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आती है ना हमारी यूथ की तरफ से खास तौर पे, और किसी किसी जगह पर वो ठीक भी है लेकिन फिर अगेन उसमें जो है ना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि जिस तरह हुकूमतों के स्ट्रक्चर्स किस तरह से काम करते हैं, व्हाट आर द रेगुलेशंस दैट यू हैव टू डील विद. मुशर्रफ ने अगेन वो बात की थी कि the entire system is there to kind of stop you from doing what you are doing, और आपके जो particular departments हैं वो उन challenges के बावजूद भी चीज़ों को digital की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. So for the benefit of the entire audience, what I would like to do is to highlight some of the challenges, for example, of working with the public sector, और किस तरह से वहाँ पर चीज़ें incrementally हो सकती हैं लेकिन एकदम से आप उसको broader change नहीं कर सकते. Any of you can start, or whoever wants to. Thank you, sir. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है हमारा ई-ऑप्शन जो हम लोग लोकल गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं. आप लोगों ने प्राइवेटली भी काफी ई-ऑप्शन के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे. इवन एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर भी हम ई-ऑप्शन का प्रोजेक्ट देख रहे हैं. हम अभी तक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको लाइव नहीं कर पाए क्योंकि उसके रूल्स अप्रूव नहीं है. जब तक रूल्स अप्रूव नहीं होंगे वो जाके कैबिनेट से अप्रूव होंगे. जब तक रूल्स अप्रूव नहीं होंगे हम उसको लाइव नहीं कर सकते. सेम गोज फॉर ई-टेंडरिंग. उसके अंदर भी हमें यही प्रॉब्लम्स आती हैं. एक छोटी सी एग्जांपल है, अभी हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग पेमेंट्स, जो साढ़े बाकी ई पेमेंट्स के बारे में. हम लोगों ने क्योंकि आप नॉर्मली आप लोग वन लिंक के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो वन लिंक के साथ अपनी इंटीग्रेशन करते हैं और अपनी फीसेस लाइव कर देते हैं, बैंक के साथ लिंक कर देते हैं. जब वो बात आती है आपके वन लिंक अकाउंट्स की, ट्रेजरी अकाउंट्स की, तो आप वन लिंक के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट उसको नहीं कर सकते. अगर आप बैंक के साथ किसी बैंक के साथ जाते हैं तो बैंक आपको एक फी बताता है. फी के केस के अंदर आप पेपरा के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं. आपको मल्टीपल 2-3 बैंक से EOI लेना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना है. उसके बाद आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है एंड डिफरेंट लेवल पे कैबिनेट से जाके अप्रूवल लेनी है, तब जाके आप लोगों को वो अप्रूवल मिलती है. तो इसके लिए इसको कैटर करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट और PITB ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ई-पे, जो करेंटली डील कर रहा है वन लिंक अकाउंट की जितनी पेमेंट्स है उसके साथ. जब इसको लॉन्च किया गया, बिफोर कोविड लॉन्च किया, जो मैंने पहले भी बात की कि कोविड में काफी चीजें जो है हमारी यूजफुल हो गई. बिफोर कोविड इसको कोई अपडेट नहीं थी, इसको कोई यूज नहीं कर रहा था क्योंकि लोग जस्ट कैश और इस तरह की एप्लीकेशन, इवन बैंक्स की भी मोबाइल एप्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी सस्टेनेबल नहीं थी, लोग नहीं ट्रस्ट करते थे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर. बट कोविड के डेज के अंदर उन्होंने मोबाइल की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना शुरू की. सेम गोज जब उन्होंने अपने टोकन टैक्स पे करनी है, डिफरेंट लेवीज पे करनी है, ड्यूटीज पे करनी है, तो उन्होंने फिर ई-पे स्टार्ट किया यूज करना. क्योंकि जो वन लिंक से फीसेस वो सारी स्टार्ट में हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं थी. सिर्फ हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन को और एक दो और डिपार्टमेंट्स को लिंक किया था. टोकन टैक्स के बेसिकली ये सर्विस को लॉन्च किया था और एट द मोमेंट 31 सर्विसेज जो है, फीसेस जो है, इसके थ्रू हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. और ये सिर्फ वन लिंक की पेमेंट है. जो दूसरा कमर्शियल अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम कमर्शियल अकाउंट्स फीस के साथ लिंक करने जा रहे हैं. इसके अलावा हमारी एक और प्रोडक्ट है पेजेड, जो बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इशू आता है कि अगर वो POP के साथ जा रहे हैं या किसी और थर्ड बैंक के साथ जा रहे हैं और उन्होंने एज पर पेपरा बाकी बैंक्स के साथ भी रेट्स लेने हैं. सो PITB बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉन्ट्रैक्टिंग में नहीं जाना पड़ेगा. आप G2G कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं और पेजेड के थ्रू आप वन लिंक इंटीग्रेशन करके कोई भी सर्विस आप ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं. So basically ये थोड़ा सा ही पे के हमारे से. Akif, would you like to add? मैं सर की बात सेकंड करूँगा. थोड़ा switch on कर. थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इसमें. Since I worked in the Punjab federal government, बलूचिस्तान की, कराची में मैंने काम नहीं किया, बाकी गवर्नमेंट से. KP का एक वेरिएशन ये है कि KP का गवर्नेंस मॉडल बड़ा बेहतर है. पंजाब में काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है.
चैलेंजेस ऑब्वियसली आपको मोर और लेस जहाँ पर सरकारी मुलाजिम होगा, सरकारी ऑफिस होगा, हर जगह पे चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, एक ही तरह का आपको माहौल। आप एक हमने जो काम किया है हम इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से चलना शुरू। पहले बिजनेस प्रोसेस और गवर्नमेंट प्रोसेस वन एक ही सेक्रेटरीट प्रोसेस है, फाइनेंस पर होती है, केडी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तो उसको सिमिलरली एक गवर्नमेंट लेवल हमने ये किया कि जो सर्विसेज है हमारी 80+ सर्विसेज हैं, लोकल गवर्नमेंट है, वक्त के ऑफिस सर्विसेज है, लैंड कार्ड है, एक्साइज के, पुलिस के, क्लियरेंस के, इस तरह उनको हमने रिलीज किया, अननेसेसरी स्टेप्स को रिलीज किया। ये एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ताकि आप उसमें इनोवेशन, क्योंकि अभी अगर आप पंजाब का भी उठाएं, उन लोग जैसे हमारा भी उठाएं तो आपको अभी टेलीग्राम वहाँ पर नजर आएगा, हालांकि दिस टेक्नोलॉजी या कुछ नहीं उसका है, तो आपको ओवर द टाइम ये चीजें देखनी पड़ती। एक तो ये है कि फर्स्ट आपको एक हमने एक इंजीनियरिंग की जिसको सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चले, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट फिर हम इसको डिजिटलाइज करते हैं, तो आपके पास एक डिपार्टमेंटल बाय-इन हुआ। दिस आपने बड़ी खूबसूरत बात की, एंड वी वर द फर्स्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान, सो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। जब भी आप पंजाब में भी 1000 सोल्यूशन बनाई होंगी, 50-500 हमने बनाई होंगी। अब इशू क्या है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे इन चीज़ों को सेंट्रल लेवल पे, तो आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के इश्यूज, तो ये आपने कोविड में भी देखा होगा, आपके सिस्टम से एनसीयूसी के अपने सिस्टम से कंपैटिबिलिटी के इश्यूज को आपको, सो अब हम एक ओपन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं ताकि आप तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकें। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच था ताकि आप उसका एक वैल्यू लेकर, देन ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ एप्लीकेशन ऐसी जैसे गवर्नमेंट की एप्लीकेशन हमारी with the name of Dustek, we have an application, इसमें तमाम सिटीजन सर्विसेज किसी एक आप रजिस्टर करते हैं, किसी करीब भी नादरा किसी सर्विस सेंटर पे बायोमेट्रिक करते हैं, सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, सर्विस की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होती है, आपका बैकग्राउंड चेक ऑटोमेटिक होता है, आपकी पेमेंट फंडिंग के साथ हमारी अपनी इसका इनका माई पे है, ई पे, सो वी हैव पामीर पेमेंट गेटवे जो हमारा, एंड देन आप घर पे ही तमाम सर्विसेज मिलती है। ये भी हमने स्टार्ट की। With this, we have reduced 80% of the human involvement. अभी आपको किसी भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अब ये एक इनोवेशन थी, ऑब्वियसली इस इनोवेशन के लिए हमने ये जो पूरा गवर्नमेंट का बिजनेस मॉडल है उसको आपको चैलेंज करना पड़ता है। ये जो पुराना आपका बिजनेस मॉडल इससे नहीं चलेगा कि आप हर स्टेप में आते हैं कागज देखिए, ये इसकी जरूरत नहीं, अननेसेसरी स्टेप्स करें। अब चैलेंज की बात, चैलेंजेस में क्या है? चैलेंजेस एक आपका टॉप पे आता है चेंज। हमारी केपी में ये हमें प्लस पॉइंट है कि जो लीडरशिप है वहाँ से हमें बड़ी अच्छी चेंज मैनेजमेंट होती है, जिस केस में मैंने आपको बताया आम हिसाब से वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, इनमें साइड वाला वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है कि आप तमाम स्टेप्स रिमूव करें, लोगों के स्टेप्स होते हैं, उनका काम उसी पे चल रहा है, क्योंकि किस्म का बिजनेस उस पे चल रहा है। टॉप से अगर आपकी वो आती है एसीएस होम ने इसको वो किया, अभी मुझे साहब से वेरी सीनियर ऑफिसर उसने कहा कि ये नया मॉडल नहीं हमने करना। Once top से आपकी चेंज मैनेजमेंट आई, सब लोग अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस आती है। एंड वी आर हियर एट टॉप लेवल, जैसे कि आप चेंज मैनेजमेंट को लेकर आते हैं, आपको लीगल फ्रेमवर्क उसी जगह से स्टार्ट है जिस तरह आपने भी फरमाया। सो एट केपी लेवल जब भी हम इस तरह बिजनेस नया मॉडल लेकर आते हैं, नया बिजनेस मॉडल, ये नया बिजनेस मॉडल होगा, इसके साथ ये लीगल फ्रेमवर्क होगा ही होगा। सो जब तक हमारी प्रोडक्ट बनती है उस टाइम तक हमारा लीगल फ्रेमवर्क आ चुका है। सो इन केपी वी डिड जो हमारा रूल ऑफ बिजनेस है उसमें हम ये प्रोविजन दे चुके हैं फॉर ऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, हमें कोई इशू नहीं है। अब लास्ट टेक जो है जो यंग लोगों के लिए गवर्नमेंट में काम करना है मुश्किल काम, बाहर से गवर्नमेंट बड़ी आसान नजर आती है, अंदर बड़ा मुश्किल होता है जब आप इंटरनली ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये है कि एक चीज जो मैं अपने टेक्नोलॉजिस्ट लोगों को कहूँगा कि हम लोगों ने भी गवर्नमेंट को प्रपोज नहीं किया इनोवेटिव। हम कहते हैं कि ये एआई बेस्ड ये नहीं हो सकता, वो नहीं, हमने कभी प्रपोज नहीं। आप प्रपोज करें, इनोवेशन लेकर आए, सो लोग अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल, सो ये ई-समरी सिस्टम दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड का ई-फॉर्स सिस्टम से, सो हमने उसके यूजर एक्सपीरियंस पे बहुत काम किया, सो बड़ा डिटेल से, क्योंकि आपको देखिए एक ऑफिसर जिसकी कैरियर 20 साल उसने सिर्फ वही काम किया, एक पेपर पर लिखा हो, और उसका क्वेश्चन भी बड़ा वैलिड है कि जी मैं ये पेपर जो मैं निकालता हूँ ये 5 सेकंड में निकालता हूँ, आपका सिस्टम 1 मिनट लगाता है, आप मुझे किस तरह कन्विंस कर रहे हैं? दिस इज वेरी pertinent question. So here is come the user experience का area.
हमने तकरीबन 6 महीने फील्ड एक्सपीरियंस पे काम किए एंड देन अब वो सिस्टम इस पे अगर वो अडॉप्ट करके आपके पास आ गया। सो इनोवेशन बड़ा की एस्पेक्ट है। मैं आपको एक क्लास एग्जांपल आमने सिस्टम मैंने आपको बताया। सो इससे इंटायरली आप घर से कर सकते हैं, आपका E2 साइड सिस्टम से इंटायरली आप घर से कर सकते हैं। सो एक हमारे पास विंडो होती है वॉक इन कस्टमर की, जिसका ई-खदमत सेंटर हमारे सिटीजन फेसिलिटेशन सेंटर। सो इस वॉक इन कस्टमर एक हमारा मोबाइल ऐप है जो हमने लॉन्च किया। 1 महीने में वी हैव रिसीव्ड अराउंड 40,000 एप्लीकेशन और उसमें 98% वो लोग थे जिन्होंने मोबाइल से ही अप्लाई किया। सो दिस मींस दे आर कन्वीनिएंट विद द टेक्नोलॉजी रादर देन कोई पुराना उसमें देखना। सो इनोवेशन इज द की। अगर आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इज वेरी ओपन, स्पेसिफिकली मैं केपी का कहूँगा। केपी में चूंकि वी हैव वेरी गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वी आर हमारा जो एपेटाइट फॉर चेंज इन एडॉप्शन इन डिजिटल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है। सो हमारे लिए कोई कभी कोई इशू नहीं हुआ है कि हम कभी कोई प्लेटफॉर्म को ऑपरेट नहीं कर सके आइडिया को। थैंक यू आकिफ। अच्छा, अब मुस्तंसर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। आपका पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस है मोबिलिटी के अंदर, हम लोगों ने जितनी भी एग्जांपल्स वगैरह भी देखी हैं KPIT बोर्ड से भी, पंजाब IT बोर्ड से भी, आई थिंक द फोकस रिमेन्स ऑन पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस डिलीवरी और मेरे ख्याल में वो ठीक भी है क्योंकि अभी ज़्यादा अर्जेंट चीज़ें ये थी शायद। लेकिन इसके अंदर जो हमारी वो सस्टेनेबल सिटीज़ वाली चीज़ है वो बिल्कुल इग्नोर होती जा रही है। वन ऑफ द बेसिक नीड्स इन लार्जर सिटीज़ आई थिंक इज के मैस ट्रांसपोर्टेशन, मैस ट्रांजिट वो किस तरह से होगी। तो आपने क्योंकि इस हवाले से काम भी किया है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी और उसको आप किस तरह से समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए से सॉल्व किया जा सकता है? Okay, I think I want to take a step back to involve your audience a little bit on this one. अच्छा, हम पाकिस्तान में, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जुगाड़ का लफ्ज़ सुना? Raise your hand. ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो डिजाइन थिंकिंग समझते हैं? Right? So मजेदार बात ये है कि डिजाइन थिंकिंग जिसलिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, you want to identify problems जिनको आपने solutions create करने हैं. Okay? As private sector, there's a lot you guys can do yourself. There's certain responsibility of government. For example, infrastructure. They need to provide you quality internet. Right? Then they need to provide you some sort of security and privacy. मैं आपको एक data privacy की एक छोटी सी example दूँगा. आप सोसाइटी में एंटर होते हैं, अपना आईडी कार्ड कितने लोग फ्रीली दे देते हैं? You have to show your ID card when you enter any society, right? And you hand it over easily, no problem. But when you give a photocopy to someone, you are like, write your name, etc. Everyone has a copy, guys. What are you trying to do, right? So we don't think about these. There are certain things that governments have to do, but there is a lot that private sector, you guys can take that initiative. And especially जब से मोबाइल की इंटरवेंशन आई है ना, there are a lot of services that we can create without involving anything. So there are two ways to solve any problem: top down and bottom up. So when you try to do top down, especially in Pakistan, you know, Mosharraf, everyone here has added that. It is very hard. It takes time. There is regulation in place. Startup world में you're gonna get out there and break things, right? So you don't have that fear. By the time you have already put all these scooters or cars out there, then regulation follows. So coming back to mobility now, there's a lot we can learn from Europe in particular. When you talk about digital services are really great in Norway, in Estonia, there are more reasons behind that. For example, there are very few people. You know, our village is bigger than Estonia. So how do you even begin to understand the scale of things? So scale is important. What has happened in Europe, in smaller countries, that's your pilot test bed. Similarly, you can make your own little village, your own little mahalla, your pilot, and then scale from there. One of the best things Pakistan has is also population, right? So we tazad jo hai na, we are always in a conflict of sorts. Because population is a great thing because they are all your users sitting out there. But again, when you try to solve, for example, pollution, then you have to change a lot of behavior so that it becomes very, very difficult. Now, another thing in mobility, for example, we don't really have a tendency of sharing our cars, right? We love our cars. हम अपनी गाड़ी से बहुत मिल सकते हैं. वो गाड़ी ने रोज धुलना है और माशाल्लाह अभी the air quality situation is so bad. You drive your car in the city, by the time you come home, it's already changed color. So how will we clean it? So do we have private sector young people like yourself who are coming up with solutions?
Okay, how many people give their trash out every day to some collector? Right, everyone does. आपने कभी सोचा वो कूड़े के साथ करते क्या है? Have you ever thought about better service when we were really young? At least this little, a woman and guy would come and they would segregate the trash. Right there, right then. But now it doesn't happen anymore. Now they take it all and dump it and burn it. And we really don't need that. So there's a lot you guys can start doing and stop blaming the government. Because if you wait for something to happen from the top down, it will never happen. The gift we have is we are extremely innovative. We are very jugaad. We solve problems like that. But jugaad has one problem that we need to fix. That is, you're trying to solve the problem for the shortest possible time. Okay? So I hope it added some perspective. Yeah, thank you so much for such brevity, making it very point relevant as well. So coming back to you, Mosharraf, हम लोगों के obviously you have worked in this area for a very long time. What areas do you particularly think कि ये सबसे ज़्यादा priority पे होने चाहिए हमारे when it comes to problem solving और खास तौर पे इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि we can address them through technology as well. I think that the opportunity set or the opportunity matrix in Pakistan is it's so vast that, and I have policy ADHD as it is, so I have difficulty focusing on any one area. But the opportunity set is so vast, and the integration of service delivery, I think, in the way that we think about convergence. We were using this term in the late 90s, and we were talking about cable TV and the phone line and how the fiber was going to create convergence. I think what we're now seeing is that it's not the wire that's created the convergence, it's the back end and the apps themselves. Every app, every successful app has a voracious appetite to eat up not just its own complementary and competitive sort of actors, but also what is adjacent to it. So, my answer, I'm not trying to wiggle out of an answer, but I mean, the answer always, almost in every question related to policy for me, especially in local government, will be education. And I do think that low-cost private schools are a massive opportunity set for folks that are interested in developing apps or solving problems. But I would also say that there are maybe 100 different applications that are education adjacent. So it's not just the issue of, the school or the child or the teacher needing support. It's also the parent who's a key actor in what we call the learning nexus, between students, teachers, and parents. What kinds of parents are being serviced with support for education? Really, barely even the elite private schools. Even elite private school parents are constantly unhappy with the quality of services being provided, with the level of engagement being provided, and with the nature of assessments. Because as we grow up into technology, all of us, we're realizing that the set-piece standardized testing regime works for some people. So, for example, it worked, for me, it worked much better for my younger sister, who was really good at exams. And then I have another sibling who it didn't work for. And that sibling has done better than all of us in life, was always smarter than us, but wasn't very good at giving their exams. And so for many years, well into that person's late 20s, there was a perception of failure. Now, there are people sitting here who have experienced that, either in their personal life or they themselves. And so, are there solutions for people who are never going to do well on standardized scores, but who have enormous human potential? Are there solutions for mothers? Female mobile ownership in Pakistan is historically and record-breakingly low, but females do have access to mobile phones. What can be done to create touch points between young mothers, young women who have children that are attending low-cost private schools, who want to be engaged but don't have a nexus to do so? So I think that's the area in which I would probably push people into. But like I said, I think there's, if you're interested in young mothers, then you should be interested in maternal and neonatal health.
you should be interested in routine immunizations. Are there opportunity sets there? We just talked about COVID. अगर NCOC के पास जो पोलियो का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ना होता तो पाकिस्तान का जो कोविड रिस्पांस था वो इस तरह इतनी तारीफ उसकी दुनिया में ना होती जितनी हुई. So we had a back end and we basically in a sense we jumped on an already moving bus and then we reconfigured the bus to do what we wanted it to do. I think ये जो macro वाले solutions हैं ये young लोगों के लिए in a country of 240 million people ये बड़े intimidating हो जाते हैं. ये frankly हम सब के लिए भी बहुत बड़े सवाल थे कि NITB और PITB एक दूसरे से बात कर सकें. PITB के ऊपर उस वक्त हमने वो जो टेली स्कूल था उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो 3 हफ्तों में PITB ने पूरा का पूरा जो डिजिटाइज करने की कोशिश की. You know, it was successful in some ways, wasn't ideal in other ways, but you know the organization learned, and the next time something happens, will be better prepared. So I think on the macro questions, I think there are good people in place, like two of our panelists here. But I think that on a lot of the gaps, especially in the private sector and especially at the local level, nobody stood up and said, "Yeah, I think I can solve this problem." So that's where I would put traffic. All right, thank you, Mosharraf. Coming back to you, Mariam, आपने बताया कि PITB ने किस तरह से एक अपटेक देखी है पोस्ट कोविड और पंजाब अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तकरीबन आई एम गेसिंग तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान लिव्स ओनली इन पंजाब. तो उसके हवाले से व्हाट आर द लर्निंग्स और आगे PITB के पर्टिकुलरली क्या ऐसे गोल्स हैं कि जिनको आपने एड्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी? हमारे जो मेन फ्यूचर गोल्स हैं, सबसे पहले जिसके ऊपर बात की थी आपके सामने रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. ही इज टोटली राइट कि हमें बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि बेसिकली यही क्रिटिकल एक सक्सेस फैक्टर है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी डिजिटाइजेशन की स्कीम लेकर आते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी ग्रोथ, उसके आउटकम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अब यहाँ पर बिजनेस प्रोसेसेस चेंज करने के ऊपर एक लंबी चौड़ी डिबेट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. दूसरा जो हम काम कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया, हमें खिदमत मरकज हमारे हैं जो बेसिकली उन सिटीजन्स को फैसिलिटेट करते हैं जो ओवर द वन विंडो आप सारी सर्विसेज एक मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट की वेरियस सर्विसेज आप उधर से क्लिक कर सकते हैं. अब जब हमने स्टार्ट किया था तब सिर्फ 15 सर्विसेज थी अंडर वन रूफ और ओवर द स्पैन ऑफ 4 to 5 years now we have 162 services over in khidmat practice and surprisingly abhi tak 6.7 million citizens ने सर्विस अवेल की है फ्रॉम खिदमत मरकज और उसमें जो इंश्योर किया गया है हमारा सर्विस डिलीवरी टाइम विच इज 99.8% और ये जो कैलकुलेट किया है थर्ड पार्टी वैलिडेशन के थ्रू इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में कैलकुलेट हुआ है. सो ये हमारा खिदमत मरकज का था. उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास जो मैंने आपसे कहा कोविड और डिमांड के ऊपर जो डिपेंडेंट है, डिमांड की बेसिस के ऊपर हमें जिनकी जो सिटीजन्स मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उनकी तरफ से डिमांड आई कि हमें ये सर्विस जो आप खिदमत मरकज में दे रहे हैं हमें वो मोबाइल एप्लीकेशन मिल सकती है ताकि हम वो सर्विसेज घर बैठे भी अप्लाई कर सकें. So for this purpose, this is सर की है दस्तक एप्लीकेशन. We work on Go Punjab. Go Punjab के अंदर वो तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहाँ से आपको कर सकते हैं. अब ये दो तरह की तो कम्युनिटी का हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. एक कम्युनिटी वो है ना जो ना सेक्टर्स में जाना चाह रही है ना मोबाइल फोन उसको यूज करना है. सो उनके लिए हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं जिसके अंदर वो जस्ट कॉल करेंगे और पब्लिक सर्वेंट उनके डोर स्टेप पे जाएगा और वहाँ से उनकी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन अप्लाई करेगा. मिनिमम फी है जो करेगा. सो बेसिकली ये तीन चीजें हम लोग अब उस कम्युनिटी को भी करें क्योंकि आपकी 50 to 60% वो कम्युनिटी है जो स्मार्टफोन यूज कर रही है जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. बाकी सारी कम्युनिटी के पास शायद ये चीजें ना हो बट उसके पास शायद वो नोकिया फोन हो जिससे जस्ट वो आपको कॉल कर सके. सो अब हम उस कम्युनिटी को भी कर रहे हैं कि उनकी भी हम उनको भी बेसिक जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है. अब बात होती है कि जहां हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, हमारे 4 मेन वाइटल यूनिट्स हैं जिनको रिकॉर्ड करने के लिए अभी भी इवन मेरे घर में भी कोई अगर कहता है कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आज ही मेरा पूरा दिन साया हो जाएगा, मैं नहीं आ जा रहा.
सो वो चाहते हैं कि बस उनका घर बैठे ही काम हो जाए. सेम गोज फॉर जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा जो वहाँ पर डाउट है वही सारा काम करवा दे, हमें ना जाना पड़े. सो बेसिकली हमारी ये 3 तरह की चीज जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो सिटीजन है, हम उसकी डिमांड्स को कैसे कर रहे हैं. इसके बाद जो सर ने एक और बात की कि सिंगल बस की बात की. अब हमारा जो नेक्स्ट है, हम एक सिंगल बस जो प्रोविंशियल बस सर्विस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें जितनी सर्विसेज हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हो, ओवर द काउंटर फैसिलिटीज हैं और सर्विस बेस्ड मशीन्स सेल्फ सर्विस मशीन्स लाइक क्यूसिक, उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं. सो इसके बाद जो हमारे एक और फ्यूचर है, फ्यूचर में हमारा जो प्लान है, हम लोग डिजिटल आइडेंटिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो मशीन के पीछे जो बैठा हुआ बंदा है, हम उसकी आइडेंटिटी को ट्रैक कर सके, उसको वैलिडेट कर सके. हमें उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बुलाना ना पड़े कि आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करो. तो हम उन सब की एक डिजिटल आइडेंटिटी काम कर रहे हैं. सो अभी फिलहाल अगर हम बात इस जो हमारा फ्यूचर है, इसके अलावा तो काफ़ी और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट डिजिटली हमारा जो मेन है कि हम तमाम सिटीजन की एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जिससे वो लॉगिन किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर सकता है. थैंक यू. थैंक यू मरियम. आकिफ साहब, आपसे भी इसी तरह का सवाल पूछना चाहूँगा. आपने बताया कि ऑलरेडी गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है केटी में और बिजनेस प्रोसेस में इंजीनियरिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं. इसके बाद ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द केटीआईटी? अच्छा, काम तो बहुत बड़ा प्लान है. मरियम ने कहा वी आर लकी, हम जिस तरह आपने कहा, सो वी हैव प्रॉमिस्ड कि गुड गवर्नेंस स्ट्रेटजी. So we incorporated a technology part in that strategy. So it's mandatory for every department to adopt the technology. So that's a good luck. Next कुछ जो projects हैं, मैंने आपको बताया enterprise architecture का, so we have done that. Open government strategy, we are the first province in Pakistan with open government strategy है. We have a portal with 6,000 data, high quality data, 6,000. E-identity पे भी completed our work. इनका है the Khyber pass. So it's a single pass for a citizen. अभी जो जितने भी हमारे लोग जा रहे हैं biometric के लिए, so they're verified for 5 years, 3 years के लिए verify कर रहे हैं कि background check को continuously कर रहे हैं. So उसको हम incorporate कर रहे हैं digital as part of digital signature जो हमारा e-noting का process है. इस साल हमारा प्लान ये है कि हम 80 सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वो करेंगे. एंड आइडिया यही है कि जी किसी सिटीजन को किसी ऑफिस जाने की जरूरत ना हो. अब जो हमारा सेक्टोरल प्लान है उसमें काफी काम है. इस तरह लोकल गवर्नमेंट का है, एजुकेशन का है, हम लैंड रिकॉर्ड में कर रहे हैं. अगर आप अपना फर्द सिस्टम देखें, इट्स अ वेरी टिपिकल टाइप. आप एस्टोनिया, साउथ कोरिया के फर्द देखें, फर्द मतलब जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, तो इट्स अ वेरी एलेबोरेट कैपेसिटी बेस्ड वो है. तो हम अभी ये इसी पे जो हमारा फोकस सेक्टोरल बेस में कोर चीजें हम कर चुके हैं गवर्नेंस की. आप लैंड उसमें करेंगे जी गिरदावरी के जो सिस्टम्स हैं, तो पुराने पटवारी जाता था, अब हम करेंगे जो ड्रोन बेस करें, कुछ एआई बेस करें, कुछ पैटर्न बेस करें, कास्ट इफेक्टिव करें. वी डोंट हैव एज मच फंड एज पीआईटीबी. बहुत कम फंड है हमारे पास. ठीक है जी, पीआईटीबी से बहुत बड़ी टीम है. मैं आपको अगर अपनी टीम बताऊं, सो वी हैव हार्डली 12 लोग जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम के साथ जो कि पूरा काम करते हैं. सो वी हैव अ स्मॉल टीम, बट अगेन इनोवेशन के लिए आपको इतनी बड़ी टीम की जरूरत होती है नहीं होती है, सेकेंडरी बात है. लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कितना इनोवेटिव आपका काम है ताकि आप कर सकें. चैलेंजेस अगेन हर जगह पे आपको सरकार में एक ही तरह के चैलेंजेस हैं. 3 किस्म के लोग होते हैं. 90% लोग वही होते हैं जो कि एज प्रपोज पे चलते हैं, जो नीचे से प्रपोजल आता है उसको एज प्रपोज. अब आपके पास 10% वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअली चाहते हैं कि कुछ हो काम हो, और ये 10% लोग ही आपके इंटरेक्ट करते हैं. ये आपको हर जगह ऐसा है, हर जगह. जिस तरह से मेरे ख्याल में जो हम वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी अडैप्शन की बात कर रहे होते हैं ना, स्टार्टअप्स वगैरह भी, मेरे ख्याल में उनमें भी हमें अर्ली अडैप्टर्स ही चाहिए होते हैं. तो वो गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में ऐसा ही. मतलब आपको 26% रेजिस्टर्स होते हैं ना, वो हर जगह पे ही मिलेंगे. उन्हें काम नहीं करता, उन्हें कसम खाई होती है कि जी आप चाहे जो भी करें, अब मैं ये नहीं करता. ठीक है. अगेन आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें. मैं आपको एक एग्जांपल जो पंजाब में भी किया, हमने भी किया, फ्री आटा की डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स वेरी हेक्टिक. मैंने पूरे रमजान अपने ऑफिस में गुजारी. फ्री आटा की डिस्ट्रीब्यूशन बैग आप दे रहे थे.
सो मेरे एकदम से कोई टेंशन याद आ गई. सो उसमें ये था कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो एक नॉन आईटी का बंदा कर रहा था. जो आटा डीलर होता है. वो जो मेरे गांव का बंदा है उसने मुझे कॉल की, यार मैंने तो कभी जिंदगी में राइट इस्तेमाल नहीं किया, आप कह रहे हैं सर इस पे तो जैसे समझाओ इस तरह. तो ये चीज, लेकिन जब आप उसको इंसेंटिवाइज करते हैं, उसको हर बैग की एंट्री या बैग के प्रोसेस में 25 रुपए देने थे आपने गवर्नमेंट. सो उसमें तकरीबन केपी में हमने 9,000 डीलर्स के थ्रू पूरा एक महीने का किया प्रोसेस किया. सो ये जब आप करते हैं तो आप ये चैलेंजेस डेफिनेटली है. चैलेंजेस हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं. हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी अपना एक्सपीरियंस है 18 साल का गवर्नमेंट के साथ कि ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी हुई. आपके फंड भी आ जाते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है आपकी, एंड देन विजन. आप लॉन्ग टर्म चीजों को, जिस तरह मरियम ने भी कहा, इनको तो अच्छा टाइम मिलता है 15 दिन. हमें बताएगा कि जी कल तक आपने ऐप बना दी. इनको काफी 15 दिन बड़े अच्छे दिन है आपके पास. So कोविड में हम डेवलप एंटायर कोविड ट्रैकिंग सिस्टम था विद इन 2 days. और रात को कहा गया कि जी आपने वो किया करना है. सो इस तरह गवर्नमेंट में होता है. यू कैन नॉट से नो टू योर चीफ सेक्रेटरी. वो आप कहते हैं कि जी हमें बताया गया कि जी एंटी स्मगलिंग ऐप बनाएंगे. अच्छा, अब क्या करना है उसमें किसी को पता नहीं था. तो अब क्या किससे मिले जी बस आप तो बनाए, क्या बनाए नो आइडिया, लेकिन कल तक चलिए. So ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, then you have to अब ये this is all responsibility at the top of the चाहे आईटी बोर्ड पंजाब का हो, चाहे जेपीआईटी बोर्ड का हो. अब ये वो विजन है जो कि आपको कनेक्ट करता है कि जी आपने इसको किधर कनेक्ट करना है अपने कोर सिस्टम के साथ. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऐप बनाते रहें, वो एक महीने चलेगा खत्म, एक महीने चलेगा खत्म. हमारी जो ज्यादा आप एफर्ट देके ना ये गवर्नमेंट में ये चीजों पे सही होती है. और दूसरा कुछ चीजें ऐसी जो बड़ी विश लिस्ट की चीजें होती हैं कि बस सो अगेन चैलेंजेस ऑब्वियसली है, लेकिन देयर इज टू मेनी अपॉर्चुनिटीज. मैंने अपने करियर में मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने कोई आइडिया प्रपोज किया, अच्छा आइडिया प्रपोज किया विद वर्किंग प्रॉपर कि जी ये इस तरह होगा, फिर भी वो रिजेक्ट नो नहीं. लेकिन ऑब्वियसली कुछ जगहों पे एडॉप्शन की चीजें होती हैं, कोई अडॉप्ट करता है कोई अडॉप्ट नहीं करता है. सेकंड इसमें आपको चेंज मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली वो करना. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज. मैंने कुछ कल लास्ट सिटीजन पोर्टल का कुछ इनसाइट निकाला है, सो मैं जस्ट शेयर करूंगा, वो इस पैनल के बाद. ठीक है. आकिफ साहब थैंक यू. मुस्तंसर आपने भी जो है वो हमारे दोनों आईटी बोर्ड के उन हवाले से भी सुनी बातें, उनको क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं. आपसे सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से कोलैबोरेट कर सकता है आपके ख्याल में विद द पब्लिक सेक्टर इन डिजिटाइजिंग थिंग्स, इन डिजिटाइजिंग सर्विस डिलीवरी पर्टिकुलरली. और ज़्यादा जो है वो मुशर्रफ मे बी यू कैन वे एज वेल के कीपिंग इन व्यू दी 18th अमेंडमेंट जो हमारी है जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ अपने प्रोविंसेस को पास ऑन कर दिया है. इसका एक जो चैलेंज हमें मेरे ख्याल में नजर आता है वो ये डिसइंटीग्रेशन है. मतलब हर कोई अपने अपने सॉल्यूशंस के ऊपर काम करे एंड दे टेक अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. और ये अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलर टू पाकिस्तान, एनी फेडरेशन यू गो टू इन द वर्ल्ड उनके सबकी प्रॉब्लम्स हैं. ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वो मशहूर है कि वहाँ पे जो सिर्फ इंटीग्रेटेड वो होते हैं, हेड होते हैं, जबकि जो सारा कुछ कर रहे होते हैं वो स्टेट प्रीमियर्स कर रहे होते हैं, उन्हीं की पॉलिसी चल रही होती है. तो वहाँ पे भी इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द की चैलेंजेस. तो हम खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर का रोल यहाँ पे किस तरह से देखते हैं इन मेबी ब्रिंगिंग द इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेटिंग विद द पब्लिक सेक्टर इन सॉल्विंग सर्विस डिलीवरी चैलेंजेस. Thank you. Let me sure speak about the 18th Amendment. Maybe government political knowledge is not sufficient enough. Okay, so I think I wanted to get feedback for 2-3 things. Digital identity की मालूम है बात की. It's very important. But you see already in this conversation we can figure out कि उनकी अपनी digital identity. So this is a problem. It doesn't matter what services each province is making. As long as we could have a way to have a central digital identity, it would help. And you know, we have seen this Facebook, Google, you can log in from any of these IDs. It's very easy to make these systems interoperable. So I think that is very critical. It is central of any smart city, smart citizen, these services that you are making.
Another thing from experience that I wanted to share, अगर आप passport office में भी जाते हैं ना, so in the end then you have to, it's kind of digital, but then you have to take your challan and wait in the queue. Like we got to finish that. So for that, I think that's where private sector, for example, can really help. People can at large can help. So there needs to be a way where you can give very quick feedback, which is good, you know. And so अभी क्या होता है, feedback आप दे तो सकते हैं, लेकिन you never know if some action is going to be taken on it. You can make like a voting system on it अगर कोई priority बन गई है. So kind of an interactive exercise. I think that's very very important. फिर digital infrastructure जो है ना, हमारा internet को याद है. कभी internet shuts down sometimes, which is a problem itself. But basic infrastructure level that needs to get much better. हमारी जो internet की backbones हैं, they are not sufficient. Like if I was talking to someone in Singapore or in Norway, they're already worried about the backbones they have and what happens if a submarine damages that line. Right now we have these satellites coming in here as well. So that's another thing. Something none of us have touched so far is data and AI. Data is everything. Data is a very, very powerful. लेकिन I have a fear. There are a lot of young people sitting in the room as well. लेकिन मेरा fear ये है कि हम operators बन के रहते हैं. अभी especially if you are, आपको chat GPT का पता है किसी को यहाँ पे, right? So you are all using it, but you are mere operators. You don't know how it works. It is controlled or run by few individuals who have power to change the product. So are we building our own AI capacity, or are we going to be mere operators of the technology that the world presents to the world? Right? So especially in government, when you say, yeah, we welcome AI-driven initiatives, are they those who are simply using some AI API and calling it AI? Or apps we have also बनाते हैं for the sake of app making app नहीं होना चाहिए, right? So government does that, we do that. We like numbers, 100 apps बनाते. It is not enough. You got to see how many people used it. So the way you analyze has to change. And last thing I would like to close with, so Mosharraf can add on the government side of things. Anyway, it's easier to manage smaller units. So it is better to find a way to make units smaller, just for governance. And particularly in climate, what I want to leave with, we have been working a lot on making climate change dashboards. Everything you do creates an emission. Now it is important that we have these dashboards at city level, at personal level, and we link these to people's taxation, for example. That's how you create an incentive. So if anyone here wants to chat about innovation, what problems you can solve, what private sector can do, like it's within the private sector, right? When we talk about collaboration, one major challenge in Pakistan is we have no trustability. So when two people are talking about something, we exaggerate so much that you have to assume 50% of what the other person has said is right. And how do you even start to cooperate when you think the other person is lying? So right, we got to look within and be a bit more honest, be a bit more humble, and present what we really, really want to solve. Thank you so much. Ji, Mosharraf, आप क्या कहना चाहेंगे? I mean, Musstanser has very helpfully triggered a couple of long-standing issues that I have with how we speak about ourselves as Pakistanis, and I think it's important. How many people have heard of committees? And they have relatives or maybe themselves participate in committees. यार ये बड़ा अजीब है कि जिधर मैं जाता हूँ, स्पेशली मुस्तंसर जैसे भाई, और मैं इनको इंसाफी नहीं कह रहा क्योंकि मैं कभी किसी को ऐसे ना कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम जहाँ जाते हैं, स्पेशली पढ़े लिखे लोग जो हैं, हमारा अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में एक व्यू है कि डिसऑनेस्टी और लैक ऑफ ट्रस्ट है. अच्छा, मजे की बात ये कि ये गलत नहीं कह रहे, देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, सो दैट पार्ट इज नॉट फॉल्स. There are some contexts in which there is lack of trust. Yet in the same country, and how many of you have been to a janaza? Right. So if you do this survey in any other country in the world, it will be less than half. So I use janaza and ROSCA, rotational credit societies and associations,
ये essentially कमेटी का एक formal term है. कमेटियां और जिस तरह से जनाजे इस मुल्क में अटेंड होते हैं, ये एक लो ट्रस्ट सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. कमिटीज की एग्जिस्टेंस और जनाजों पे लोगों का होना is proof that this is not a low trust environment. I'll go further. You'll also notice oftentimes कंधा जो दे रहा होता है जनाजे पे, members of the family of the deceased will not know कि ये कौन है. अक्सर वो लोग जो अंदर कब्र में जाके they're laying down the bodies, उन लोगों का बाद में पता चलता है नहीं जी ये वो I've been at a funeral जहाँ बाद में पता चला कि जो नीचे बंदा था वो दुकानदार था और जो the person who passed away had been regularly going to that store for 10-15 years, so he felt so compelled that he was there at the thing. Now that same guy, that storekeeper will रेड लाइट नहीं ऑब्जर्व करेगा, तो फिर मुस्तांसर और मैं दोनों उसको कहेंगे यार ये देखो डिसऑनेस्ट हो ये और वो, मैं उसको इंसाफी कहूंगा ये नहीं कहेंगे. लेकिन द पॉइंट इज ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैं सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और सब बहुत अच्छे. द पॉइंट इज कि आई थिंक ये जो लो ट्रस्ट और हाई ट्रस्ट है एक ही सोसाइटी में, इसके बारे में मुझे इसका जवाब नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि एक जगह पे मार्केट में 5-5 करोड़ रुपए की, अगर आप फैसलाबाद वाली मार्केट में जाएं, मेरा एक साथी बैठा फैसलाबाद से, you can ask him, 5-5 करोड़ पर वीक वाली कमेटियां भी हैं, आंखें बंद करके बोरी में पैसे जाते हैं और पैसे वापस आ जाते हैं. कभी कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कभी कोई कत्ल या कोई जो है फटा उस पर नहीं हुआ. और उसी सोसाइटी में 100-100, 200-200 रुपए वाले ट्रांजैक्शंस पे हम मतलब dishonesty भी करते हैं. You're right. So if there were apps that could tap into the high trust element of who we are and negate the low trust element of who we are, and that will be local. That has to be local because high and actually, so मैं pretend कर रहा हूँ कि सारे, मुझे पता है मेरे पास सारे जवाब नहीं है, लेकिन एक मेरी थियरी इसके बारे में ये है कि जो low trust transactions हैं वो local नहीं है और जो हाई ट्रस्ट ट्रांजैक्शंस है वो लोकल है. मीनिंग कि जब आप लोकली एंगेज्ड होते हो तो आपको अगले का बरादरी, उसका मोहल्ला, उसके भाई और बहन की शादी का हुई भी है, अगर शादी में इश्यूज हो रहे हैं, अगर उनकी कोई बीमारी है, उनके बच्चों के ग्रेड्स क्या हैं, ये चीजें आपको लोकल लेवल पे पता है. जब आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सिमेट्री होती है तो आप ट्रस्ट ज्यादा करते हो. जैसे आप लोकल से, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में एक जो है जगह है जड़ावाला, जब आप जड़ावाला से मदीना टाउन चले जाओगे और एक बंदा ट्रांजैक्शन करने वाला जड़ावाला में, दूसरा मदीना, तो सडनली जो इंटिमेसी है और जो ट्रस्ट होगा वो कम होगा. जब आप उसी को जड़ावाले वाले को आप मिला देंगे इस्लामाबाद वाले के साथ तो वो कहीं और जो है वो जो है डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. सो देयर मे बी सम आंसर्स इन हियर. तो अगर मैं हैकाथॉन के पार्टिसिपेंट से अगर बात कर रहा होता है, शायद जो हम इस वक्त कर रहे हैं, तो आई वुड एडवाइज टू एक्सप्लोर दिस लो ट्रस्ट हाई ट्रस्ट to avoid solutions that are going to depend on low trust scenarios and to lean into and exploit much more the high trust environments, because when you exploit those you'll have a much higher rate of return on your investment in whatever technology or app that you're trying to come up. Yeah, sure, please. Just to add one line, take what you did well was you did deliberate, that takes that work and things that do. In fact, if we look into this in a deeper way, the world is now talking about 15-minute cities. This would come on the, this is very 15-minute city. The question is now, in general perception, we got to work on it. How do we let these little outshine us, traveling around the world? So I think it's we hope there would be people looking into this question. All right, that is very, very insightful. Thank you so much, panelists. Before we conclude this panel discussion, we'll have a short 10 minutes question and answer session. I'm sure we have a lot of questions. Can you give the mic by? Okay, so this is the first person. I'm gonna invite just a little bit earlier. Okay. I missed the presentation, but then we'll connect later. I hope after. Absolutely. Thank you. Thank you so much for your time. Ji.
सर दिस इज सुलेमान अहमद. मेरा क्वेश्चन खान साहब से. सर आपने बताया कि पीआईटी बोर्ड बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन डिजिटल यूथ समिट जो है वो 2021 के बाद नहीं हुआ. इसकी क्या वजह हो सकती है? ये अगर वो करवाने एक ही वजह है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और कोई वजह नहीं. थैंक यू सर. आपका नाम क्या है? आप क्यों नहीं करवा रहे? No, you take initiative and I'm sure they will support you. हमारे पास वेल रेडी. नहीं, इनिशिएटिव जो मेरे ख्याल में मुस्तंसर साहब कहने की वो बार-बार डिस्कशन में भी ये बात हो रही थी कि सारे काम जो हैं वो शायद गवर्नमेंट के करने के नहीं है. आपको वो चीज़ अच्छी लगी है, शायद उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको चीज़ अच्छी लगी होगी, तो perhaps you can take the initiative as community and then KPIT board can support you. This is what they meant. ठीक है. हम ये कर सकते हैं कि एजी के सामने अपना वो कर सकते हैं, और वो अगर कहते हैं तो नेक्स्ट मंथ हम कर सकते हैं. मेरा सवाल मरियम से होगा कि पीटीआईटी के बारे में बात करें पेपरलेस कि हम पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं. अब बच्चे मोस्टली, जैसे मैं फैसलाबाद की बात करूंगा, पंजाब की बात करूंगा, एजुकेशन सेक्टर में बोर्ड के अंदर बच्चे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन. सहूलत देती, बहुत अच्छी सहूलत है, लेकिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया. हालांकि जो फॉर्म आता है बच्चे की पिक्चर भी लगी होती है, ऑलरेडी उनके पास डेटा होता है, लेकिन फिर बाद में वही प्रोसीजर है. आपने पेपर प्रिंट लिया, उसको टेस्टेड करवाया, बैंक फीस जमा करवाई, फिर आपने ट्रैवलिंग करनी है, बोर्ड में जाके कुछ जमा करवाना है. तो उसमें बताएं जो बेनिफिशियरी है उसको फिर पेपरलेस, तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ. उसके लिए क्या पॉलिसी है इन फ्यूचर? So to be honest, I'm working on local government projects. जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है, मैंने विजिट किया था रावलपिंडी. So रावलपिंडी बोर्ड में, तो वहाँ पर जब उनके मैंने प्रोसेसेस देखे थे, अभी वो काफी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. They are trying कि उसको अपडेट किया जाए, लेकिन अभी उनके पास जो सिस्टम जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड में पड़े हुए हैं. सेकेंडली, जब वो डेटा रिकंसाइल करते हैं कि किस बच्चे ने इस दफा अप्लाई किया है, उसका जब डेटा निकालता है उसका डेटा चेंज होता है. जो प्रीवियसली उसी बंदे ने किया हो, बच्चे ने किया हुआ पहले अप्लाई, उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द रिकॉर्ड पर्पस. अभी ये मैनुअल सिस्टम, अभी ये मैनुअल जो है प्रोसेस कंप्लीटली हम लोग कमिट नहीं कर सकते, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर चेंजेस होना लाजमी है. जब तक हमारे रूल्स नहीं होंगे, बिजनेस प्रोसेसेस चेंजिंग नहीं होगी, उस सब तक कुछ नहीं हो सकते. बट हम लोगों ने जहाँ तक बात है ई-कॉस की, जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें फाइल सिस्टम है, जहाँ पीआईटी की बात करें तो पीआईटी ने बिल्कुल पेपरलेस कर दिया है. हमारा जितनी भी वर्क होता है, जितनी भी फाइल अप्रूवल्स होती हैं, वो सारी ई-कॉस पे होती है. बट ऑडिट के एस्पेक्ट के लिए हमें अभी भी मैनुअल पेपर्स ही चाहिए. ऑडिट सारा मैनुअल पे होता है, तो हमें वो मंथ ईयर एंड के ऊपर जब हमारा कमर्शियल ऑडिट आता है, हमें वो सारे प्रिंट निकालने पड़ते हैं, उनको प्रेजेंट करने पड़ते हैं. आइडियली इसके ऊपर काम हो रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है, इसके ऊपर काम हमारे मैनुअल्स बन रहे हैं. तो जब लीगल फ्रेमवर्क मिल जाएगा तो मैनुअली कंप्लीटली जो हम इसको खत्म कर देंगे. Assalamualaikum ji, I am Gulzeba and I am heading an education technology company. We are working mainly on examination reforms. In KP, we are at the moment working with 5 boards. In Punjab, we are working with 2 boards and 2 assessment bodies. So examination का जितना process है, 7 million students आपके 9 से 2nd year तक के papers देते हैं, जो कि total manual process है. So we are the first private company which is working with this particular sector since like last 4 years. And we have trained more than 7,000 women with us, looking at question development and paper checking पे काम करती हैं. This is just to give you a little background that we are working with public sector on improving the service delivery, so that we can actually digitally transform the existing processes. The problem again and the challenges is like as you mentioned, Mariam, that the policies are not there. So, for example, for the e-marking in KP, there was no policy. कि जिन लोगों ने ऑनलाइन ऑन स्ट्रीम मार्किंग की है, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की, उसकी पॉलिसी नहीं थी, पेमेंट्स गॉट डिलेड. In this particular case, most of the time when there is any demand on digital transformation or digital technology, it's actually directed to PITB or KPITB or maybe SITB or whatever.
So how do you see the private public sector partnership in this? How will you actually focus on that the private sector will be strengthened in this particular case to improve the service delivery? Because if all the demand will go to, let's say, PITV, and PITV will start working on 100 plus services, so where will the private sector will stand at this point? Thank you. जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि पीएटीपी ऑलरेडी इस चीज को सपोर्ट देता है. अगर मैंने जो एक प्रोजेक्ट की बात की थी, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा इस्लामिक, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही हमने मतलब पार्टनरशिप के थ्रू ही किया है. वो हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं किया, थर्ड पार्टी के थ्रू ही डेवलप करवाया है. सो हमारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग आउटसोर्स करते हैं. हम सारे प्रोजेक्ट्स खुद नहीं डेवलप करते ना, हमारी इतनी कैपेसिटी है भी, लेकिन इतनी ज्यादा कैपेसिटी हमें भी उसी हिसाब से एचआर भी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना पड़ेगा. तो जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वी ट्राई कि हम उसको आउटसोर्स करें. हमारी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और आई थिंक वो पाशा जो बेसिकली इसको लीड करते हैं, हम लोग इस चीज के ऊपर हैं. इवन आप लोगों के जो हमारे अभी को वर्किंग स्पेस बनाई है हमने, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही बनाई है. सो वी आर ऑन इट. अगर आप लोगों की तरफ आपके पास कोई है सोल्यूशन तो मैं आपको जो रेलेवेंट टीम है उसके साथ मूव करवा देती हूँ जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन को देखती है. सो आप फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, माइट बी आप पे सक्सेसफुल हो जाए. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद असर, आई एम फ्रॉम मुल्तान. मैं क्विकली एक को ऐड कर लूं कि जो आइडिया बता रहे तो बेसिकली कैसर आलम साहब का आइडिया था, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब है. फिर वही ई मार्किंग वाला मेरे ख्याल में सिस्टम की आप बात कर रहे हैं. लकीली कुछ दिन पहले अभी हमारी एक इंटरनल बोर्ड की इंटीग्रेशन और उसकी अटेस्टेशन मैनेजमेंट पे हमारी एक अंडर नेशनल एक्शन प्लान एक हमारे टास्क मिला हुआ है. सो अब वो जो आप फरमा रही है कि जी लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए बन चुका है, अंडर द होम ऑफिस उसको लीड कर रहा है. सो उसमें तमाम प्रोसेसेस उनके होंगे, जो ई मार्किंग वाला भी है, इंटरनल प्रोसेस, और बाकी जो अटेस्टेशन के जो प्रोसेस हैं तो वो अभी आप किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं होगी. रिगार्डिंग द प्रायोरिटी वो है तो केपीएटी बोर्ड का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है. वी हैव वेरी शार्ट टीम, मैंने बोला 12 बंदे हैं. सो हम सिर्फ उन कोर क्रिटिकल चीजों को ऑटोमेट करते हैं इन हाउस. बाकी तमाम का तमाम हमारा वो है वो एंटायरली सीएफसीएस, साउथ नेस्पार्क, नेटसोल, ईवाई, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे लोग तो कोर प्रोसेस जो इंटरनल बड़े सेंसिटिव किस्म के होते हैं, सो वो हम पास करते हैं. बाकी इंटायरली जो बड़े बड़े वो है वो आउटसोर्स करते हैं. जी आप. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मुल्तान से. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी या मैनेजमेंट को लेके मेरा क्वेश्चन ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी को लेके डिजिटली किस तरह आप लोग ट्रांसफॉर्म करें या फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आपके? ये पब्लिक सेक्टर से है, प्राइवेट सेक्टर से? बोथ सेक्टर्स. I don't see you, but I thought you were asking the public sector. But look, in the private sector, everything we do. So, for example, when we talk about cars, how circular is the car that you're buying? Previously, क्या होता था? So, I want to really explain this well. Generally, जब बाहर गाड़ी बनती है तो इसकी लाइफलाइन, let's say, assuming 5 से 10 साल. But when that car comes to Pakistan, it gets another lifespan of 50 years. So the cars are never died, right? Into Fortuner जिस तरह आप लेते हैं, उस एक गाड़ी यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए की बिकती है. So वो गाड़ी है जो अगर मैं यूरोप में दूँ तो I would have to pay the government to take that car away. So circular economy is really big in Pakistan if you talk that. But similarly, the industry gives a lot of incentives, right? So it is not very hard to the labor cost Pakistan is more affordable. So you can spend a lot of money to kind of continuing using the same product. Okay, so you either upcycle it, or you recycle it, or you reuse it. So you keep sure that it keeps going around. So when I don't know if you work with the private sector or not. I work with different organizations. Okay, so it is very important for you guys as a startup to also measure the impact. There's something called end of life cycle.
So that is, once you have used the product, what does it take? What is the cost of putting it back into the environment? So that's something you have to calculate. मैं सिर्फ एक पॉइंट क्योंकि जो प्रॉब्लम बताया बेसिकली इस मैं यही करूँ कि ये अगर इस पे ही अपना प्रॉब्लम सो ये हमारे लिए ऐसा चलिए I think we'll take one. आपके पीछे आप वहाँ पे देखो. One question I want to ask. ऐसे ही आप पूछ लें, हमें आवाज आ रही है. I have two quick questions, and my first question is from Mr. Akif. So you mentioned about the citizen, right? So keeping that the KP literacy rate is around 52 to 55%. Additionally, keeping that as of 22, I might be wrong, only 36.5% of Pakistan population has an access to internet. How do you think, sir, is it accessible? Like, how do you think, sir, its usage would be increased, keeping the internet? My second question was from Mr. Mosharraf, if one can answer that. Mosharraf, Zaidi mentioned about digital transformation needs time. Do we have like what's the time frame that would take for a digital transformation? Is it 5? Is it 10 years? Is it 15? Or because of that time we have to make framework. According to that time we could make the framework. Or is it like हम वो framework fluid रखें ताकि digital process जो है वो day by day upgrade हो जा रहा है, day by day change होता जा रहा है. तो आप लोग क्या कहेंगे? ओके, पहला क्वेश्चन जो आपका है, सो सिटीजन पोर्टल पे सिर्फ एक मीडियम नहीं है. आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वन, ठीक है. देन देयर इज अ कल्चर ऑफ कुली कचेरीज जिसमें लोग आते हैं गवर्नमेंट हासिल में एट यूसीएलसी लेवल पर, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर उनके साथ लोगों से वो करता है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है सिटीजन को. सो आपका इनडायरेक्ट कस्टमर सिटीजन भी आपका आ सकता है जिसके पास कोई लिटरेसी नहीं है. फर्स्ट कुली कचेरी में आपने कंप्लेंट की, आपके पास कोई वो नहीं है, फोन नहीं है, हम आपसे क्या करेंगे, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर, और अगर आपका मोबाइल नंबर है या जो भी है आपके पास नॉर्मल सा फोन है, तो आपकी कंप्लेंट हम रजिस्टर कर लेंगे. आप गवर्नमेंट आपकी बिहाफ पे रजिस्टर कर लेगी, फिर इसकी ट्रैकिंग होगी और आपको एसएमएस पे उसकी ट्रैकिंग नजर आएगी. तो इससे बड़ा एरिया हम कवर कर रहे हैं. कॉल सेंटर का हमारा एक आइडिया था कि हम लोगों को वो कर सकें, लेकिन वो हम नहीं कर सके. लेकिन पूरा इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम अभी हमें जो आ रहा है. मैं भी एट द एंड में ऑफ द सेशन में आपके साथ लोकल गवर्नमेंट के कुछ कंप्लेंट भी शेयर करूंगा कि क्योंकि आपका आज का सेशन लोकल गवर्नमेंट से है, सो आपको आइडिया होगा किस तरह हम पाकिस्तान की इशू फ्री हमने बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के मेजर इश्यूज क्या है बेस्ड ऑन द डेटा जो दैट वी हैव कलेक्टेड. रिगार्डिंग आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दूंगा. गवर्नमेंट में दो आंसर्स हैं, एक बड़ा प्रोफेशनल आंसर है, एक सरकारी आंसर. सरकारी आंसर ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी कभार आपके पास 2 घंटे होते हैं, कभी कभार आपके पास 1 दिन होता है, आपके पास 12-15 दिन होते हैं, ठीक है. सो और कभी कभार अगर जो काम आप ना करना चाहें तो आप उनको फेज 1, फेज 2, फेज 3 में डिवाइड करके उनको 1 साल 2 साल के लिए आप वो कर सकते हैं. सो दिस इज अ सरकारी जवाब, राइट. अब आते हैं प्रोफेशनल क्या. नॉर्मली आप बनाते हैं 5 साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक रोड मैप बनाते हैं, 10 साल का बनाते हैं, इसको नहीं आकर देखिए. सो उनका एक विजन होता है कि 20 साल क्या होता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी हमारा जो मसला क्या है कि बड़ी क्विकली टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है. आप देखें आज से 5 साल पहले एआई की पेनिट्रेशन देखिए, ब्लॉकचेन की देखिए, वीआर एआर की देखिए, डेटा एनालिटिक्स की देखिए. इवन मैं अगर बताऊं कोविड में डेटा एनालिटिक्स को सिर्फ कोविड में सीरियस लिया गया. कोविड आया तब हमें पता चला कि ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं, कोविड के लोगों को स्प्रेड क्या है डिजीज की, डैशबोर्ड का कल्चर आया. सो अब अगर आप 5 साल लेके तो ये बड़ा वो आया. अब आप देखें हर जगह डेटा एनालिटिक्स बनी. सो आइडियली आपके पास 5 साल का टाइम तो होना चाहिए. देन आपके एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क्स होते हैं, कोविड का है, आईटेल का है, तो उस पे आप उसको प्लान करें एंड देन उसी को चलाते रहें. जरूरी नहीं कि आप हर चीज 1 महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें. अगर तो सरकार ऑल टाइम कर देती है. सर आप ये I think his answer was very
very good. But you also use the term fluid. जितनी भी APIs अभी जो इतना भी programming होती है ना सब open API based होती है. So everything you are doing, you are making an API. So it has to be. So even आपका answer सरकारी था. It has to be based in any case. But we can make sure that whatever APIs we have, the API documentation, for example, is shared. I think that is helpful. So I think you answered your question yourself. All right, thank you. Thank you so much, panelists, Akif, Musstanser, Mariam. Thank you so much. Ji. Very quickly, sorry. I have a very quick and very obvious question before we let the panel discussion and everything. Today's theme, of course, is a pre-hackathon. We're not the hackathon itself will come later, and it's a civic hackathon. So I have a very obvious question to our panelists. What is the issue that you think before, because the next session is going to be about finding a common ground and all collectively agreeing what are the most pressing civic issues that can later become a problem statement for the civic hackathon. What is one issue that you think is a pressing issue or is close to your heart or is something that you think is the thing to consider in Pakistan right now, according to you, if later the participants agree? Okay, Noor, I think that is very, very hard to answer. But there's a very good way that I want to leave the audience open with. So on a count of 3, is everyone with me? Raise your hand. I want everyone attention. Everyone, all the panelists included. Okay, on a count of 3, I would ask you to do something with me. Would you do it? Yes. Okay. On a count of 3, close your eyes and think about one problem that has bothered you since your childhood, since forever. Okay? On a count of 3, close your eyes. 1, 2, 3. Now just think about that one thing that you really are bothered with and you would like to solve. Think deep. If something comes to your mind, slowly, without talking to anyone, open your eyes and write it down on your notes. If you have written it, please open your eyes. Has everyone written it? Raise your hands who has written it. Okay. सबने लिख लिया? Okay, किसने लिखा है? Can someone raise their hands? जिन्होंने लिख लिया? I will start with with my fellow panelists. Akif, so if there is one problem that you wanted to solve, what is that? A citizen is a government. As a human being. Right. Local government. अच्छा मैं यही चाहूँगा कि मैं किसी सरकारी ऑफिस और make sense. क्योंकि जब आप सरकारी ऑफिस जाते हैं तो एक मिसमैनेजमेंट की स्टार्ट आती है. आप अपना एक टाइम मार्क पर आप डिसअपॉइंट. मैं कभी विश नहीं करूँगा कि मैं इस तरह. Okay, this is brilliant, right? अब इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज बनाई है जो you would like to solve. Is there one more person in the audience who would like to add? आपने क्या लिखा? आप glasses वाले हैं. What's your name? आपने क्या लिखा? Education. Beautiful. आपने क्या लिखा? Sanitation problem. Right. So this is how you would start making this up. And please do me a favor. ये जितने भी आपने लिखे हैं, tweet this over to Noor. So she gets that. So thank you very much. Thank you. Noor, आप बाकी भी पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं? One word, anything that they think they would want to. ठीक है, मैंने तो बता दिया कि सरकारी ऑफिस बिल्कुल ना आए. अच्छा मैं क्विकली एक टेकिंग द अपॉर्चुनिटी मैं थोड़ी सी चीज आपके साथ शेयर करूं. जस्ट वन. मैं आपको अच्छा in Pakistan citizen portal we have received 8 lakh 71,000 complaints on municipal services. पाकिस्तान की जो टॉप 10 इश्यूज हैं उसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज जो
कि पंजाब का टॉप वन। So सबसे बड़ा इशू इन दोनों प्रोविंसेस में डेटा के बेस पर नेशनल सर्विसेज at the federal level it's electricity and gas, right? अच्छा, इनमें से जो कंप्लेंट्स में से है तकरीबन 5 लाख कंप्लेंट पंजाब की है विजिटल सर्विसेज की, और बाकी जो है केपी से है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के मसाइल क्या है, वो आपको जरा थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम उसमें क्लीनिनेस के सबसे ज्यादा इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, रिपेयर ऑफ स्ट्रीट्स के इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, इंक्रोचमेंट के हैं, वाटर सप्लाई स्कीम के हैं, स्ट्रीट लाइट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्ट्रे एनिमल्स सिंध में जो टॉप कैटेगरी है वो स्ट्रे डॉग्स की है, सबसे बड़ा इशू स्ट्रे डॉग्स का। पार्किंग अड्डास का है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन रोड है, अनहाइजीनिक फूड है, ग्रेवयार्ड है, इलीगल बेड बोर्ड है, लो हैंगिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, टीएमए के प्रोजेक्ट में करप्शन सबसे बड़ा एक कंप्लेंट रजिस्टर किया गया है, सीवरेज है, ब्लॉक ड्रेन है, एंड फॉल्टी स्ट्रीट लाइट्स। ये कुछ इश्यूज जो कि लोगों ने कहे हैं। दिस इज ये 8 लाख लोगों ने जो समरी है मैंने आपको बताया। ये वाला डेटा वैसे कभी पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होता है या सिर्फ आप? ये पब्लिक के लिए भी केपी का जो एक हमारा ओपन डेटा पोर्टल है और केआईटीबी जो है ना पीएमडीयू है वो भी शेयर करता है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए शेयर किया ताकि आपको पास एक होलिस्टिकली आइडिया हो कि किस टाइम सिस्टमैटिकली क्या है। ब्यूटीफुल। सो मेरे ख्याल में दिस ब्रिंग्स अस टू अ ग्रेट कंक्लूजन, क्योंकि हम लोगों को जो नूर ने सवाल किया था उसका जवाब पब्लिक से भी मिल गया है, और उसके अलावा आप लोगों के लिए भी ये फूड ऑफ थॉट है कि अगर आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वगैरह डिजाइन कर रहे हैं इस हैकाथॉन के लिए, तो आपको किन एरियाज को टारगेट करना है। Maybe we were not able to talk about these in length in this panel discussion, but what can happen is these particular panelists and all the other experts are available here. You might have their contact. If not, you can reach out to them on LinkedIn. So आपकी जो discussions यहाँ से generate हुई हैं, they can continue beyond this session. और इसमें आप लोगों को अगर कोई भी help चाहिए तो GIC की टीम, Optimize Digital की टीम, all of us are here and we will be ready to help you. जी वही मेरा एक मैं बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया मैं काम कर रही हूँ। मैं बिजनेस कंस्ट्रक्शन पोर्टल के ऊपर काम कर रही हूँ। सो वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो मैप्स है वो ऑटो करेक्ट के हैं, उनकी जो फाइल साइज है 150 MB है। I want to convert it in PDF but in high res. So if anybody can help in it, so please आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे एक्सेस कर लें, so would be really great अगर किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि we want online applications but ये चीज हमें यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है AutoCAD फाइल। ठीक है, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है आई थिंक, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड विद दैट आई विल लीव यू। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच द टीम ऑप्टिमाइज डिजिटल GIC, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन प्लीज।